Hi, good morning. Good morning. Good morning, morning, ma'am. ma'am. Good morning, Good everyone. morning. Good morning. Good morning. So I see Sarita ji walking and a beautiful weather behind her always. Yeah. That's highlighted on my screen. Okay, so today is the magic wand practice. So so many of y'all have been asking कि हमको अगर किसी और के लिए लाइफ चेंज करनी हो या किसी और के लिए कुछ विश करनी हो, प्रेयर, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो वो आज हम कर सकते हैं और ये प्रैक्टिस आप रोज कर सकते हो, इसमें कोई वो तो है नहीं. ऑल द प्रैक्टिसेस लाइक टुडे आई डिड द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ टुडे आल्सो. इनफैक्ट आई डिड 3 प्रैक्टिसेस टुडे. एक मेरी बहुत पहले बीच में एक छूट गई थी, तो वो मैंने आज करी है वो भी. तो इस तरह आप कितनी भी प्रैक्टिसेस रोज कर सकते हो, उसमें कोई लिमिटेशन तो है नहीं. तो ये मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिसेस मतलब हम जब 23 चैप्टर्स हम कर लेते हैं, उसके बाद हमें ऐसी फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन आते हैं कि हम उन फ्रीक्वेंसी से लोग किसी और की जिंदगी बदल सकते हैं. दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. और इसीलिए मैजिक वॉन्ड यानी कि जादू की छड़ी. सो इट्स नॉट दैट हमारे हाथ में अब जादू की छड़ी है, बट हम खुद एक जादू की छड़ी हैं. और हम अगर फोकस करके अपनी एनर्जी से किसी और को हम हील कर सकते हैं, उनके डूबते वो बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं, टूटे हुए रिश्तों को हम अपनी फ्रीक्वेंसी से जोड़ सकते हैं. तो इतनी पावर हम में आ गई है. क्योंकि जब हमने कल मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ चैप्टर किया था, तो उसमें एंड में था दैट आफ्टर टुडे इफ यू हैव डन दिस प्रैक्टिस और आप यहाँ तक पहुंचे हो, so you have become a true alchemist who can turn anything into gold, right? So with that frequency, the whole idea is to channelize now लोगों की लाइफ बदलने के लिए, and that's what magic wand is all about. So we'll just see the image here. So इसमें कोई एक हैट रखी हुई है और सामने एक कोट है. दैट मीन्स कोई पर्सन है जिसको आप जानते हो. तो ये जब प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं, तो क्योंकि ये सारा गेम ही फीलिंग्स का होता है, तो इसीलिए हम लोग ऐसे लोग लेंगे अगर हमको जिसकी भी जिंदगी को टच करना है, जो हमसे बहुत क्लोज हैं. शायद जिन लोगों को आप नहीं जानते हो, उन लोगों के लिए शायद फीलिंग नहीं आ पाएगी इतनी स्ट्रांगली, स्पेशली अगर आप न्यू टाइम प्रैक्टिशनर्स हैं और आपने ये वाली बुक पहली या दूसरी बार की है. तो इसीलिए इसमें बहुत स्पेसिफिकली ये कहा है दैट इट इज टू बी डन विद समवन हु यू रियली लव एंड समवन जहाँ पे आपको फील हो रहा है कि उनकी जिंदगी में ऐसा क्यों चल रहा है और क्या आप कुछ कर सकते हो कि नहीं. ये बहुत जरूरी है. सो दैट फीलिंग्स आर इम्पोर्टेंट. Okay, so that is what this chapter is all about. Do it for someone who's close to you, while you can also do it for someone जो random लोग हैं. आप कहीं रोड पे जा रहे हो, you're traveling in a metro, you're traveling in a bus, and you're seeing कोई बहुत दुखी है, बीमार टाइप का लग रहा है, उनके लिए भी कर सकते हैं. लेकिन उसमें मैजिक डस्ट बहुत ज्यादा काम आती है, और मैजिक वॉन्ड में इसीलिए स्पेशली लिखा हुआ है that do it for someone who's close to you, so that the feelings are very natural. एंड फीलिंग्स आती हैं तभी एनर्जी डायरेक्ट हो पाती है उनकी तरफ बहुत इजीली. सो इसमें इमेज में जादू की छड़ी, यू आर डूइंग इट फॉर दैट पर्सन. सो यू आर, योर फीलिंग्स आर दैट जादू की छड़ी. एक्चुअली फीलिंग्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, feeling of gratitude, that thank you that that person is totally healed and is enjoying the best of life. और उनकी आवाज आपको विजुअलाइजेशन में, ये विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस है, आपको सुनना होगा उनकी आवाज आपको कहते हुए कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जिस भी लैंग्वेज में वो बोलते हैं कि नाउ आई एम एब्सोल्युटली ओके और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बस फर्स्ट क्लास मैंने वॉक करनी शुरू कर दी. इस तरह से इसलिए वो क्लोज होने जरूरी होते हैं ताकि आप रिलेट कर पाओ उनसे, क्योंकि विजुअलाइजेशन में आपका होना उनके साथ में जरूरी होता है. दैट वे. So anyone who wants to read? May I read? Yes, shall I read? Okay, Shivani, go ahead. Day 24, the magic wand.
Have you ever wished you had a magic wand so that you could just wave your wand and help the people you love? Well, today's magical practice will show you how you can use life's real magic wand to help others. When you fervently want to help another person, you have immense power. But when you direct that power with gratitude, you really do have a magic wand that can help the people you care about. Energy flows where your attention goes. And so, when you direct the energy of gratitude toward another person's needs, that's where the energy goes. This is the very reason why Jesus said, "Thank you," before he performed a miracle. Gratitude is an invisible but real force of energy, and coupled with the energy of your desire, it is just like having a magic wand. Quote, "People who wait for a magic wand fail to see that they are the magic wand." Unquote. Thomas Leonard, personal development coach. If you have a family member, friend, or anyone you care about who is lacking physical health, in financial trouble, unhappy in their work, stressed, suffering because a relationship has ended, lost confidence in him or herself, suffering from mental problems, or feeling down about their life, you can use the invisible force of gratitude to help them with their health, wealth, and happiness. To wave your magic wand for another's health, imagine that the person's health has been fully restored and say the magic words, "Thank you," in heartfelt celebration of receiving the news that he or she is full of health again. You could imagine the person calling you to give you the news, or imagine them telling you in person and really see and feel your reaction. When you can feel as grateful now as you would when you heard the news that the person's health has been fully restored, it will guarantee that the gratitude you feel is as sincere and as powerful as it can be. To wave your magic wand to help someone you love with their wealth, follow the same magical practice and be as grateful as if they had the wealth they needed right now. Imagine their wealth has been fully restored. It is done, and you're saying the magic words, "Thank you," because you've received the amazing news. If a person you know is going through a tough time, but you don't know what specifically they need, or if they need help in more than one area, then you can follow the same magical practice and wave your magic wand by giving thanks for their happiness or for their health, wealth, and happiness together. Today, choose 3 people you care about who are currently in need of health, wealth, or happiness, or all 3. Get a photograph of each person if you have one, and keep the photographs in front of you while doing this practice. 1 second, Shivani, I'll just kind of will break it up. And so I'll go back to the quote जो शुरू में था. So all our chapters actually start with some quote or the other. This has just abruptly started. So it says that आप बहुत बार ऐसा life में लगता है ना, you see someone really going through a bad phase in terms of money, in terms of business, in terms of health, in terms of some issue with a court case, some police kind of a thing happening, you know, or whatever it is, या उनका काम नहीं चल रहा होता, वो बहुत sad होते हैं, उनका relationship में बहुत मुश्किल होती है, maybe there's divorce or something that's upcoming, या फिर बहुत ज़्यादा health में breakdown होता है. So we feel very helpless, isn't it? Sometimes there is a feeling of helplessness that happens, that, you know, why am I not being able to do anything? I really wish that I could do something about it. And you sitting maybe in some other country or in some other city,
एंड बहुत ज्यादा उस वक्त ये लगता है कि काश मैं कुछ कर पाती और मैं सिचुएशन को बिल्कुल बदल देती. सो दिस प्रैक्टिस इज फॉर दैट, you know. But then ये practice आप तभी कर पाओगे if you have already done your 23 assignments, and then that is when you can use your life's real magic wand. So this is not like a magic wand जो जादू की छड़ी literal जो solid वाली होती है, ठीक है. हम जादू की छड़ी बन गए अभी तक. So इसलिए लिखा हुआ है when you fervently, like आपका deepest desire है that I want to help the other person, you do have immense power. But when you direct power with gratitude, अगर आपके अंदर already वो शक्ति है कि आप लोगों की जिंदगी बदल सकते हो और अपनी blessings उनको भेज सकते हो, ठीक है, और उसको अगर आप gratitude combine कर सकते हो उसके साथ में, तो वो miracle की तरह काम करता है. और यही आज का practice है. So we have done it with Ritu, right? I mean, like she's healed so well, and you know, she was sounding as good as when I spoke to her. So she had given me a call yesterday, और वो वैसे ही बात करती है जैसे वो हमेशा करती है. मतलब कहने को तो वो बीमारी बहुत सीरियस, मतलब people are so scared of it, और you know, like बहुत ही उस तरह से वो बोलते हैं, but she's out like, you know, 3 days and out of the hospital. Why? Because so many people's gratitude energy was focused and directed on her health in her life, you know. So this is the effect it produces, like a miracle. Because सोचो इतने सारे magic wand है, सिर्फ एक नहीं है, इतने सारे लोग magic wand किसी एक person पे focused है, isn't it? Or we really fervently wanted to, you know, kind of heal her totally, although we have to continue doing it. We don't want a chemotherapy to start, okay? That's very clear. So इतने उसके, मतलब मैंने तो imagine कर लिया कि पूरी ठीक हो गई और उसके बहुत सुंदर लंबे घने बाल हैं, you know, like, so those hair have to stay the way they are. They have to become better and better, and the skin has to glow and become more radiant than ever before. So all those things we'll constantly keep focusing on. We will see the effect of it happening in our life. You know, that's the beauty of this practice. And all of us doing it, so you can imagine the power will be like, I don't know, million times X. You know, this is how it is. So इसीलिए इसमें लिखा, when you fervently want to help another person, you have immense power. And when you direct that power with gratitude, अगर आपने बोल दिया thank you for so and so's perfect health, you really do have a magic wand जो दूसरों के लिए, किसी के लिए भी जो हमारी लाइफ के अलावा है, people who you really care about. इसीलिए मैंने बोला था कि ये practice अगर for people who are known to us, people who you really care about, उनके लिए ये वाली practice होती है. While you can also do it to people, अगर feelings आ रही हैं किसी और के लिए भी, तो आप कर सकते हो. So it says energy flows where attention goes. तो हमारी energy focus है. Suppose आपकी life में कोई है, maybe आपके parents हो, and they really have some kind of a health issue going on right now. So all you need to do is, जिस तरह से ये वाली practice में बताया है कि उनकी photo, आप digital photo, hard copy of the picture जो भी है, उसको सामने रख के ये वाली practice करनी है. फोटो है तो बहुत अच्छी बात है, पावर आ जाती है उसमें. देखिए फोटो की इंपॉर्टेंस एक्चुअली मैंने मैजिक बुक में ही आके सीखा है, मतलब, एंड आई यूज इट अ लॉट. पहले मुझे इतना ज्यादा फोटोग्राफ से बहुत जल्दी फीलिंग्स आती हैं और फोकस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए भी पिक्चर्स यूज करते हैं हम लोग. तो इसीलिए हमने पहले भी अलग अलग उसमें प्रैक्टिसेस में फोटोज को यूज किया है. आज वाली प्रैक्टिस में भी हमको फोटो यूज करनी होगी, अगर हमारे पास है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो इमेजिनेशन करना पड़ेगा. तो उससे एनर्जी और अटेंशन एक तरफ डायरेक्टेड एंड फोकस्ड होता है. एंड ऑफ कोर्स उसके बाद यू विल सी द थिंग, फिर आपको इमेजिनेशन करना होता है. सो आज इमेजिनेशन वाली प्रैक्टिस है. तो इसमें लिखा हुआ है, इसीलिए जीसस भी पहले से ही थैंक यू कर देते थे कोई भी मिरेकल करने के पहले. वी ऑल नो दैट जीसस केम ऑन दिस अर्थ एज अ सेवियर. ही वाज यू नो लाइक, वो उसी तरीके से इसीलिए बॉर्न हुए थे, उनका पर्पस यही था. दैट यू नो, दैट्स व्हाई टुडे पीपल, यू नो, लाइक ऑफ कोर्स वी वर्शिप जीसस लाइक अ गॉड, बिकॉज ही हैड दैट पावर इन हिम. मतलब जिस तरह से हमको पता है ईस्टर और उसमें कैसे ही हैड लॉस्ट हिज लाइफ एंड देन ही केम बैक एंड यू नो ऑल ऑफ दैट. सो that it, like Jesus also, even he would do the same, that he would say thank you before he performed any miracle, you know, like, मतलब वो बहुत लोगों की उन्होंने जिंदगियां बदली. he would touch the lives और बहुत चीज इस तरह से, तो वो भी पहले थैंक यू बोलते थे.
that thank you for the perfect healing, thank you for so and so person's amazing relationship, very cordial and happy loving relationship with the partner or whatever it is. So इस तरह से आज हमको भी थैंक यू पहले ही बोलना है, इमेजिनेशन करके कि उनकी जो भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में जिसकी भी है वो पूरी तरह से रिजॉल्व हो गई है. Because it says that gratitude is an invisible but real force of energy. Actually it is. We don't realize. हमको ऐसा लगता है कि थैंक यू ऐसे ही बोलने से क्या होता है, मतलब इसकी जो डेप्थ एंड पावर होती है उसकी एक्चुअली मेजर्ड फ्रीक्वेंसीज भी होती हैं. मतलब जिन लोगों ने भी मेजर की हुई है फ्रीक्वेंसी, एकदम ऑरा आपका बढ़ना शुरू हो जाता है. जैसे ही आप थैंक यू बोलते हो, आपके सेल्स एक अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना शुरू करते हैं. And like the aura starts to expand. Itni power hoti hai. Whereas in the mind we may not be that happy at that moment, but the moment you said thank you, आपकी cellular energy अलग हो जाती है, आपकी environmental energy में आप इसको उसका effect आने लग जाता है. तो इतनी ज्यादा बहुत ही powerful word होता है ये, ठीक है. So but energy of desire और energy of gratitude को combine करना है. तो desire हमारा तभी आएगा जब सामने वाला हमारा बहुत known या close होगा, like आपकी close friend या आपका close relative, या जो भी है. तो तब जाके बहुत ज्यादा, इसीलिए इसमें बोला है कि for someone close to you करना है इसको, ठीक है. So it says here, Thomas Leonard का personal development coach, people who wait for the magic wand fail to see that they are the magic wand. So हम वेट करते रहते हैं, काश हमारे पास ऐसे होता, काश मैं उनकी प्रॉब्लम को ठीक कर पाता, लेकिन हम खुद मैजिक वॉन्ड्स हैं. वी हैव टू रियलाइज दिस. सो वी कैन डू इट विद एनीबडी, जो फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड हो, और एनीवन यू केयर अबाउट. ओके, सो ये याद रखना है. और जो भी किसी भी चीज के लिए कर सकते हो सकता है उनका वर्क बहुत हैवी लग रहा है उनको, आप बिल्कुल ही वर्क लाइफ बैलेंस हिला हुआ है, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, टाइम नहीं मिल रहा उनको अपने लिए, बहुत परेशान रहते हैं, या किसी को रात को बिल्कुल नींद नहीं आती है, फाइनेंशियल ट्रबल चल रहा है, किसी चीज के लिए पैसे चाहिए, बच्चे का एडमिशन कहीं नहीं हो रहा है, किसी की रिलेशनशिप एंड हो चुकी है, किसी ने अपना पूरा कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है, किसी को डिप्रेशन चल रहा है, बहुत ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स, या किसी भी रीजन से, तो आप उनको हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस विश करना चाहते हो, तो उस तरीके से ही हमको आज करना है, ठीक है. और this is one thing I want to say, that this is one change I've made in my life recently, is that I've started using the word celebration a lot. Even if I'm going to meet someone, even if I'm having a lunch, I always, so yesterday I had gone somewhere, to spend my day and to have lunch, and I was constantly like, magnificent outcome तो करते ही हैं, तो मुझे पूरे दिन भारी होना था कल, मतलब I came back in the evening 6:30 back. So मैं यही सुबह इंटेंशन करके गई थी, magnificent outcome जो किया था, that thank you for the most amazing celebration time that I had there. So when you use that word, celebration word is, it's a connotation of happiness, joy, laughter, fun, and a feeling of, like a lot of cheer and happiness in life. So when you use that word for any kind of a thing, you will see that you get so many opportunities in your life that will be so celebratory. So even if you're doing something, it should be like a celebration. Even if you're watching a movie, it should be like you're celebrating something. It should be like a celebration. Celebration word is not attached to any sadness or melancholy or anything like that. Celebration is a cheer, it's fun, it's joy, it's love, it's dancing, it's laughter, right? So everything. So that's why we always say, celebrate your life, celebrate life every day. Okay, so when you say like that, even to the universe, that thank you, universe, that I'm celebrating each day of my life, I'm celebrating my health, I'm celebrating my success. So you will see that you get so many opportunities कि आपको ऐसे मौके मिलने लग जाएंगे कि जब आपकी celebration होती है. This is how it is. When I went to Singapore, I was constantly writing that every moment I'm celebrating, So even if it was like for everything, I'm literally celebrating everything, so this is the word we need to use more. We have to hook ourselves to these words, attach your life to these words, get glued. Celebration, brilliance, phenomenal, magnificent, majestic, amazing,
Okay, because words have got an immense power. So is gratitude's power also. That word gratitude itself has that power. The moment you're using that word, there is something in your body which is changing, which is vibrating at a very different frequency. So इस तरह से थैंक यू बोल के इन हार्टफेल्ट सेलिब्रेशन ऑफ रिसीविंग, तो हमको इमेजिनेशन में ये करना है कि हम मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं. आई थिंक ये शिवानी वी हैव टू रीड राइट, हेल्थ वाला. No. Anyhow, let's read it again. So इसमें that आपको इमेजिन करना है कि आपने जिस पे मैजिक वॉन्ड किया है और वो आपको न्यूज दे रहे हैं कि वो बहुत मतलब बिंदास हो गए, उनका सब ठीक हो गया है, मौजों में है, और आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, हार्टफेल्ट सेलिब्रेशन, दिल से सेलिब्रेशन कर रहे हो इस न्यूज की दैट दे हैव रिकवर्ड फ्रॉम व्हाटएवर यू हैड सेंड देम एनर्जी फॉर. आपने जिस भी चीज के लिए एनर्जी भेजी थी उनकी जिंदगी में, वो आपको बता रहे हैं कि वो चीज बिल्कुल मस्त हो गई है, सब बढ़िया है, ठीक है, और मौजों में है, और आप उसको दिल से सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है, ये है. तो यू अटैच दैट वर्ड सेलिब्रेशन टू रिसीविंग द न्यूज and even for everything in your life. So we can read this again, Shivani, please start. To wave your magic wand for another's health, imagine that the person's health has been fully restored and say the magic words, thank you, in heartfelt celebration of receiving the news that he or she is full of health again. You could imagine the person calling you to give you the news, or imagine them telling you in person and really see and feel your reaction. When you can feel as grateful now as you would when you heard the news that the person's health had been fully restored, it will guarantee that the gratitude you feel is as sincere and as powerful as it can be. To wave your magic wand to help someone you love with their wealth, follow the same magical practice and be as grateful as if they had the wealth they needed right now. Imagine their wealth has been fully restored. It is done. And you're saying the magic words, thank you, because you've just received the amazing news. If a person you know is going through a tough time, but you don't know what specifically they need, or if they need help in more than one area, then you can follow the same magical practice and wave your magic wand by giving thanks for their happiness or for their health, wealth, and happiness together. Today, choose 3 people you care about who are currently in need of health, wealth, or happiness, or all 3. Get a photograph of each person if you have one and keep the photographs in front of you while doing this practice. Take the first person, hold their photograph in your hand, then close your eyes, and for 1 minute visualize yourself receiving the news that the person has been fully restored with whatever they need. It is much easier to visualize yourself receiving the news than it is to visualize, for example, an ill person healthy again, or a depressed person happy again, or a financially stressed person abundant again. And you will feel more excitement and gratitude if you involve yourself in your visualization. Open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words, thank you, slowly 3 times for that person's health, wealth, or happiness, or whatever combination they need. Thank you, thank you, thank you for the person's name, health, wealth, or happiness. As you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you've finished the magic wand practice by sending health, wealth, or happiness to all 3 people. You can also use this powerful practice when you're walking down the street or going about your day and you come across someone who is obviously lacking happiness, health, or wealth. Imagine you have a magic wand and in your mind, wave it
by giving heartfelt thanks for their wealth, health, and happiness, and know that you have set a real force of energy into motion. Using gratitude to help someone else with his or her health, wealth, and happiness is the single greatest act of gratitude you can perform. And one of the magical things about it is that health, wealth, and happiness you fervently wish for others, you also bring to yourself. Magic practice number 24, the magic wand. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, choose 3 people you care about and who you would like to help with more health, wealth, happiness, or all 3. Number 3, if you have them, collect a photograph of each of the 3 people and keep it in front of you while doing the magic wand practice. Number 4, take one person at a time and hold their photograph in your hand. Close your eyes and for 1 minute, visualize the person's health, wealth, or happiness has been fully restored and you're receiving the news. Number 5, open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words slowly. Thank you, thank you, thank you for the person's name, health, wealth, or happiness. Number 6, as you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you've finished the magic wand practice for all 3 people. Number 7, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, thank you so much, Shivani, for your very beautiful voice. Thank you. ओके सो अब आज की प्रैक्टिस इसमें हमको क्या करना है दैट वी हैव टू टेक द पिक्चर्स। तो 3 लोग हमको चूज करने हैं जो आपसे क्लोज हैं, जिनको आप बहुत डीपली हेल्प करना चाहते हो एंड यू वांट टू रिजॉल्व जो भी उनकी लाइफ में कुछ चल रहा है। कुड बी रिलेशनशिप, कुड बी जॉब नहीं लग रही है, कुड बी वॉट एवर इट इज। ठीक है, सो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। कई बार हमको पता नहीं होता है दैट पर्सन इज ऑलवेज वेरी डिप्रेसिव। सपोज आपके ऑफिस में कोई कोवर्कर है और आप रोज लंच उसके साथ करते हो, सब कुछ करते हो, बट वो उसने आपको पूरी तरह से नहीं बताया है दैट क्या रीजन है, क्या है। तो फिर आपको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों के लिए करना है, बिकॉज वो तीनों ही चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी उसकी लाइफ में। ठीक है, और अगर आपको बहुत स्पेसिफिकली ऑलरेडी मालूम है कि उस पर्सन के बिजनेस में कुछ डाउनफॉल आया है या उसके क्लाइंट पेमेंट्स नहीं दे रहे हैं, उसकी वजह से वो बहुत लो फील कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली आपको करना है। ठीक है, तो फिर वेल्थ के लिए करना है और आपको विजुलाइज करना है, क्योंकि आपको स्पेसिफिकली ऑलरेडी मालूम है कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनके क्लाइंट्स नहीं पेमेंट दे रहे हैं। तो विजुलाइजेशन में ऑफकोर्स उनकी फोटो आपको सामने रखना होगा। तो 3 लोगों की फोटो अगर हो तो पावर बहुत ज्यादा होती है इस प्रैक्टिस की। ठीक है, तो आपने फर्स्ट पर्सन की फोटो ली, फिर और उसका बिजनेस में कुछ डाउनफॉल था तो वो आपको रिजॉल्व करना है। तो हमको उसकी फोटो देख के आंख बंद करके विजुलाइज करना है कि वो आपको बता रहे हैं कि किस तरह से सारा सब कुछ रिजॉल्व हो गया, सब बढ़िया हो गया। और जो भी इश्यूज था, उन्होंने कहा कि अरे पेमेंट्स की तो बिल्कुल बारिश हो रही है, सारे सब ने ही दे दी मुझे, इनफैक्ट मुझे और भी 3 बहुत बड़े बड़े नए प्रोजेक्ट्स मिले हैं। ठीक है, और वो बहुत खुश साउंड कर रहे हैं। तो वो आपको अपने सारे कैनेस्थेटिक से, मतलब उनकी आवाज सुननी है और आपको वो फीलिंग लानी है कि वो बता रहे हैं और आप कैसे, वो लिखा हुआ है ना जैसे हार्टफेल्ट सेलिब्रेशन, कि आपको मन में जैसे सेलिब्रेटरी वाली फीलिंग आनी चाहिए, दैट इज जॉय एंड एक्साइटमेंट, दैट्स व्हाट सेलिब्रेशन इज ऑल अबाउट। सो दैट जॉय एंड एक्साइटमेंट आपके मन में है, यू नो, ये सुन के, क्योंकि आप जेन्युइनली उनकी हेल्प करना चाहते थे। ठीक है, और इस तरह से फिर उसके बाद एक तो विजुलाइजेशन हमको आंखें बंद करके करना है। सो दैट इज फोटो हमने सामने रखी हुई है, मे बी आपके मोबाइल पे फोटो है उनकी। सो फोटो देख के
उसके बाद यू हैव टू क्लोज योर आईज और यू हैव टू इमेजिन कि वो आपको किस तरह से बता रहे हैं कि उनकी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है और कितने अच्छे से दैट सक्सेस इज कमिंग सो इजीली टू दैट पर्सन, और आप बहुत मन में एक्साइटमेंट फील कर रहे हो। एंड देन उसके बाद 1 मिनट आपको विजुअलाइज करना है सब कुछ अच्छे से डिटेल में, और फिर स्लोली आपको बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर, सपोज आप उस पर्सन को, सपोज आपका भाई है और आप उसको बहुत लविंगली, उसका निकनेम सोनू है, आप प्यार से उसको सोनू या इस तरह से कुछ बुलाते हो, तो जो आप बुलाते हो आपको वही नाम बोलना है। जैसे अगर मम्मी को आप माँ बोलते हो या मम्मा बोलते हो तो आपको मम्मा ही बोलना है, इस तरह से। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर सोनूज वेल्थ, बिकॉज उसको वेल्थ का इशू था, पैसे का था, वेल्थ। अगर नहीं पता है तो तीनों का कर दो, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कर दो, और अगर वेल्थ का भी है तो तीनों का भी कर सकते हैं, हाउ डज इट मैटर। मतलब ये एनर्जी तो ऐसी है, जितना ज्यादा जो दोगे उतना ही मल्टीप्लाई होके वापस आएगी, तो तीनों ही कर दो। फिर उसके बाद सेकेंड पर्सन को पिक करो, ठीक है, फिर उसकी फोटो देख के focus that energy on the resolution of the problem, that is on the solution, not on the problem, ठीक है। और उनको इमेजिन करो कि कैसे उनको सोल्यूशन हो गया है, जो भी उनका इश्यू चल रहा था, हेल्थ ब्रेकडाउन था, किस तरह से है। और फिर उसके बाद इमेजिन करो कि वो आपको बता रहे हैं कि अरे मस्त, मेरी हेल्थ बिल्कुल बहुत बढ़िया है, और बिकॉज यू नो दैट पर्सन, तो उनकी आवाज पता होगी, है ना। तो अपने आप को इन्वॉल्व करना जरूरी है कि वो आपको बता रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। उस तरह से इमेजिन करना है, और 1 मिनट कम से कम विजुलाइज करके कि वो आपसे बात कर रहे हैं, आप लोग कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, और वो इधर उधर की भी बातें कर रहे हैं, जो भी जिस भी तरह से आपका उनके साथ नॉर्मल इंटरेक्शन होता है, बिकॉज यू नो दैट पर्सन सो क्लोजली, सो इट्स ईजी टू इमेजिन, राइट, कि वो किस तरह से बात करते हैं, उनका बात करने का टोन कैसा होता है, बाकी सारी चीजें, किस तरह की लैंग्वेज में वो बात करते हैं, वैसे ही सोचना है हमको इमेजिनेशन में। और फिर आंख खोल के थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर सो एंड सो पर्सन्स हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। उसके बाद थर्ड पर्सन, तो तीनों का इकट्ठे करना है सिंगल शॉट में। दिस इज नॉट मॉर्निंग प्रैक्टिस, दिस कैन बी डन एनी टाइम ऑफ द डे, लेकिन फोकस के साथ करना होगा। इसलिए अगेन ऐसे टाइम पे आप करो जब आपके पास टाइम बहुत इजीली अवेलेबल है और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है आसपास, ठीक है, और आराम से जब एट ईज होते हो, तब ये वाली प्रैक्टिस दिन में एक ही बार करनी है, एंड दैट इज हाउ ब्यूटीफुल इट इज। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये वाली प्रैक्टिस आप जैसे इफ यू आर गोइंग ऑन द रोड, यू सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट, या कहीं पे भी ऑफिस में अगर बहुत दुखी कोई नजर आ रहा है और नहीं वो किसी से शेयर कर रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, बट यू कैन मेक आउट दैट वो आज बहुत हैप्पी नहीं है, तो आप मैजिक वॉन्ड उनके लिए भी, तो 3 रैंडम पीपल के लिए भी कर सकते हो, वन नॉट वेरी क्लोज टू यू एंड यू डोंट इवन नो व्हाट देयर प्रॉब्लम इज, है ना। आप 3 उनके लिए भी कर सकते हो, और 3 तो खैर वो करना ही है, दैट्स पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस टुडे, दैट जिनको आप जानते हो। और प्रेफरेबली फोटो होना बहुत अच्छा होता है, सो देखना, कोशिश करना, अगर कहीं से फोटो मिल जाती है, कभी कभी ग्राम से, कभी फेसबुक से मिल जाती है, कभी जो भी उनके स्टेटस से मिल जाती है, कभी डीपी से मिल जाती है, तो कहीं से भी अगर फोटो मिल पा रही है तो ये बहुत अच्छा है, फिर बहुत पावर होती है इस प्रैक्टिस में। और नई फोटो है तो फिर आप ऑफकोर्स उनकी आवाज और उनकी शक्ल और उनके जैसे भी आप बात करते हो, उनसे फोन से बात करते हो, तो आप इमेजिन करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि वो 3 लोग हमसे क्लोज हैं, है ना। तो ये प्रैक्टिस है। और 3 टाइम्स हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू इसलिए बोलते हैं, जब भी क्रिएशन का प्रोसेस हम सेट इन करते हैं यूनिवर्स में, तो वो 3 नंबर में बहुत स्ट्रेंथ एंड पावर होती है। So you will actually set the real force of magic into motion when you say thank you 3 times. इसीलिए हम end में यही बोल रहे हैं that thank you thank you thank you for so and so's health, wealth and happiness. Okay, and again the key today is that use word celebration more and more in your life. You can celebrate the smallest. You can celebrate your visit to a grocery store also, that you celebrated, you went, you got everything just perfect, आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया, आपको इजी पार्किंग मिली, या मतलब जो भी जिस भी तरह से आप कर सकते हो, और आके यू सी दैट वाओ, लाइक वंडरफुल टाइम आई हैड टुडे ग्रोसरी शॉपिंग, और वंडरफुल टाइम आई हैड ट्रैवलिंग टू सो एंड सो प्लेस, और व्हाटएवर इट इज दैट यू डू. Okay, so for everything you make it celebratory in your life, then your life will become full of celebrations. So today we are celebrating someone else's success at whatever it is, है ना, health, wealth या happiness में.
So that's what today's practice is all about. So आप जिन भी लोग, आपने कल भी पूछा था कि किसी और के लिए कर सकते हैं, तो हाँ, किसी और के लिए हम ऐसे कर सकते हैं. हम मैजिक वॉन्ड है, लेकिन मैजिक वॉन्ड बनने के लिए आपको रोज ग्रैटिट्यूड में रहना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है. ठीक है. और सुबह सुबह काउंट माय ब्लेसिंग्स करना मैंडेटरी होगा, नहीं तो मैजिक वॉन्ड नहीं बन पाते हैं. मतलब इट्स नॉट इजी कि आप, मतलब अपनी लाइफ तो छोड़ो, आप किसी और की लाइफ भी इतनी क्लोजली टच कर रहे हो और इतना हैवी इम्पैक्ट उनकी जिंदगी में आपकी एनर्जी की वजह से आ रहा है. तो आपकी एनर्जी ऐसे होनी चाहिए ना, जैसे ओप्रा विंफ्रे बोलती हैं कि लेट योर कप रन ओवर सो दैट यू नो यू कैन गिव इट टू द अदर्स, बिकॉज द होल आइडिया ऑफ द ह्यूमन लाइफ इज टू सर्व अदर्स. So if you're not serving others in any way, then you don't have it enough. So first we have to serve ourselves. जो हमने किया, हम अपनी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, अपनी ग्रैटिट्यूड पे काम कर रहे थे, कल तक हमने अपना ही किया है. उसके बाद अब से हमने देना शुरू किया है, लोगों के लिए हम सर्व करेंगे अपनी लाइफ को, बिकॉज हमारे पास वो पावर कॉन्जर हो गई है ना. So that way. So आज की practice is सुबह सुबह count your blessings. We start our day by writing 10 blessings और उनको हम रीड करते हैं और 3 times thank you out loud बोलते हैं. ठीक है, जो हम कर चुके होंगे, मे बी मोस्ट ऑफ इंडिया में हम कर चुके होंगे ये वाली प्रैक्टिस. और आज हमको 3 पीपल हु यू केयर अबाउट चूज करने हैं, जिनको हम रियली हेल्प करना चाहते हैं विथ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस. और उनकी फोटो अगर हो सके तो बहुत अच्छी बात है. और एक एक को एक बार में लेंगे. टेक 1 person, उनकी फोटो सामने रखी, विजुलाइज करेंगे मिनिमम 1 मिनट के लिए, और आप ये न्यूज रिसीव करोगे कि उनकी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है. आंखें खोलो और बोलो थैंक यू फॉर दैट पर्सन्स हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस. दूसरे की फोटो उठाओ, फिर तीसरे की फोटो उठाओ. तीनों की सिंगल शॉट में उठानी है, मतलब एक हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया. ऐसे ये वाली प्रैक्टिस नहीं है कि एक का 10 बजे कर लिया, एक का 12 बजे किया और एक का 12:30 बजे किया. ऐसे नहीं करना है. इफ यू आर डूइंग एट 10 o'clock, तीनों का 10 o'clock करना पड़ेगा, एक के बाद एक. ठीक है. सो दैट इज व्हाट. और रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस. होल्ड दैट मैजिक रॉक. पूरे दिन भर में आप सोचो क्या क्या हुआ, छोटी छोटी चीजें, छोटी बड़ी बहुत बड़ी सब कुछ, और उसमें से बेस्ट चीज पिक करो और उसको थैंक यू बोल के आप सो जाओ. दैट इज व्हाट द प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट. Now we go to the money and wealth chapter in Dr. Joseph Murphy's other book, The Power of the Subconscious Mind. So कल हमने इसमें एक असाइनमेंट या एक हमको अपनी लाइफ में मनी प्रोग्रेशन का टूल मिला था, which is that alpha state of mind में wealth and success. wealth, success, 2 हमको कीवर्ड्स मिले थे. क्योंकि जब प्रैक्टिसेस करना शुरू करते हैं तो शुरू में इतनी कैपेसिटी हम में नहीं होती है कि हम लैक में ना जाएं, है ना. जैसे अगर हम ये बोलेंगे दैट आई एम वेरी रिच, आई एम वेरी प्रॉस्परस, सो वो लैक वाली फीलिंग अपने आप आ जाएगी. दैट वी थिंक दैट वी आर लाइंग बिकॉज वी आर एक्चुअली मे बी नॉट रिच एंड प्रॉस्परस राइट नाउ, है ना. सो इसीलिए बस 2 वर्ड्स हमको मिले थे, बिकॉज वर्ड्स हैव गॉट एन इमेंस पावर इन देम. सो हमको बस 2 कीवर्ड्स मिले थे, वेल्थ, success. अब हो सकता है yesterday was a Sunday and all of you must have been very busy in your household chores and other things also because the whole family is home. But today being a work day, maybe today आपको बहुत isolation में time मिलेगा, तो ये वो वाला आप आज करके देख सकते हो, because it's not just about one day, you have to constantly do it. डॉक्टर मर्फी ने हमेशा बताया है कि 2 से 3 हफ्ते उनके सारे पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को लगे थे मतलब सक्सेस रियलिटी में देखने में. सो इट हैज टू बी अ कांस्टेंट प्रैक्टिस. अगर ये वाला इशू कुछ है तो रिलेटेड टू वेल्थ एंड सक्सेस, इफ यू वांट वेल्थ एंड सक्सेस इन योर लाइफ, सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली यूज दीज 2 words at least 3 to 4 to 5 times in a day for 5 minutes each time. Okay, so ये, और आज we'll continue doing how to avoid mental conflict. Mental conflict is वही blockages होते हैं ना दिमाग में कि नहीं मेरे पास इतना कैसे आ सकता है, अभी तो इतना नहीं है, या past experiences में आपने कभी भी lakhs में एक दिन में पैसा नहीं रिसीव किया है तो एकदम से आ जाएगा, नहीं एक दिन में इतने लाखों रुपए कैसे मिलते हैं, तो उसको ही ब्लॉकेजेस बोलते हैं ना, क्योंकि हमारी सेल्फ लिमिटिंग थॉट्स होते हैं बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस. क्योंकि हमने कभी पहले नहीं देखा है कि एक दिन में सडनली लाइक वी बिकम लाइक सो वेल्दी. सो ऑब्वियसली उस हिसाब से ब्लॉकेजेस होते हैं. सो ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाती हैं जब हम पैसे के बारे में सोचते हैं, तो वो हम आज का करेंगे. उसके बाद एक बहुत ही
वैसा वाला टॉपिक है, डोंट साइन ब्लैंक चेक्स, you know, which I will explain why Dr. Joseph Murphy has written this. He's written चेक साइन करने से लैक की फीलिंग ज्यादा एक्टिवेट होती है. सो हमारा तो मैजिक चेक ही प्रैक्टिस होता है ना एक मैजिक बुक में. सो बट देन इट इज डन इन अ वेरी डिफरेंट वे विच विल स्टडी. हाँ जी, एनीवन वांट्स टू रीड? Yes. Shall I read, ma'am? Yeah, ma'am. Shall I do? आई Neeti. प्रिया, किसका मतलब मुझे वो नाम नहीं रिफ्लेक्ट होता है. Neeti. Ma'am, that's Neeti. ओके, नीति वांट टू रीड? ठीक है. Yeah. How to avoid mental conflict. The following is the ideal way to overcome this conflict for those who have this difficulty. Make this practical statement frequently, particularly prior to sleep. By day and by night, I am being prospered in all my interests, in all of my interests. This affirmation will not arouse any argument because it does not contradict your subconscious mind's impression of financial lack. I suggested to one businessman whose sales and finances were very low and who was greatly worried that he sit down in his office, become quiet, and repeat this statement over and over again. My sales are improving every day. This statement engaged the cooperation of the conscious and subconscious mind. Results followed. So this is like, you know, all of us can do this. अगर मतलब जिनका बिजनेस है वो ये स्टेटमेंट बोलेंगे, my sales are improving every day. And people who are in a job, they will say my income is increasing day by day. Okay, or my income is increasing constantly. That way. So in whichever way, when you imprint these thoughts, the blockages slowly will go. Here we are not saying that we are very rich or something, right? It is like day by day right now, whatever it is. So it might have increased just by maybe, you know, 2,000 rupees, but it is increasing every day. It is on an incremental path. You know, that's what it is. और उन्होंने दूसरा बताया था, prior to sleep, by day and by night, I am being prospered in all of my interests. So it's not just one of the interest, it is all of the interest. So this is a very powerful affirmation. Again, this can be done by day and by night. And he said that this is to be done just before you go to sleep, रात में, जब आप alpha state of mind में होते हो तब. That by day and by night, I am being prospered in all of my interests. Okay, so whether it could be, maybe you have two sources of income, maybe you have put your house on rent, maybe you do the स्टॉक एक्सचेंज या आप वो वाला काम करते हो सकता है आप कुछ ट्रेडिंग भी करते हो एज योर एक्स्ट्रा पॉकेट मनी. देन यू नो, यू माइट बी हैविंग योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जहां से भी आती है. So whatever it is, इसमें again हमको how क्या कुछ तो करना नहीं है. By day and by night, I am being prospered in all of my interest. Okay, that or my sales are. So this was a person जो जिसका business था और उसके sales and finances low थे, तो वो डॉक्टर मर्फी का direct disciple था. तो उन्होंने, वो बहुत वरिड होता था, इसलिए उन्होंने उसको बोला कि तुम जब ऑफिस में होते हो, you know, ये तो just become quiet and repeat this statement over and over again that my sales are improving every day. और इस तरह से इसमें कोई mental conflict नहीं होता, so conflicting statements नहीं देने होते. वैसे ही जो next topic है, don't sign blank checks, मतलब this is for people जिन्होंने कभी magic book या gratitude नहीं की होती, उनके लिए एकदम से sign करेंगे तो वो lack का sign होता है, that I'm greedy, I need more money the easy way and I don't want to do anything about it. Frequency नहीं होती है, because frequency के साथ money की frequency बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, तो एकदम से ब्लैंक चेक साइन करेंगे दुखी होके, वो होके, इतनी लो फ्रीक्वेंसी में तो वो वैसे ही नहीं होने वाला है. So yeah, please read this. Yeah. Don't sign blank checks. You sign blank checks when you make such statements as, there is not enough to go around. There is a shortage. I will lose the house because of the mortgage, etc. If you're full of fear about the future, you are also writing a blank check and attracting negative conditions to you. Your subconscious mind takes your fear and negative statement as your requests and proceeds
in its own way to bring obstacles, delays, lack, and limitation into your life. Yeah. So when we talk about blank checks, no, हमारा चेक साइन करना और जिसको कभी ग्रेटिट्यूड के बारे में मालूम नहीं हो उसका चेक साइन करने में बहुत डिफरेंस होता है. बिकॉज हमने भी ब्लैंक चेक साइन किया है. वी हैव डन इट ऑन चैप्टर नंबर 17 ऑफ द मैजिक बुक, जिसके पहले हम पूरा पास्ट के लिए 12 चैप्टर्स में ग्रेटिट्यूड कर चुके थे. सो हमारा लैक वैसे ही चला गया. फ्रीक्वेंसी पे हमने मनी मैग्नेट और मैजिक मनी 2 चैप्टर्स ऑलरेडी पहले किए थे, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 5 में किया था द मैजिक मनी, जिसमें हमने पास के लिए बचपन से लेके अभी तक के लिए जो जो भी पैसा आया था उसके लिए हमने थैंक यू बोला था. इवन इट वाज 10 रुपए जो हमको बचपन में कंजक के मिले थे, उस तरह के पैसे को भी हमने थैंक यू बोला था. और हमने वो we were very very grateful. So we had already elevated जो पास में हमने complaints की थी उसको हमने totally cover up कर दिया था with gratitude, है ना. उसके बाद मनी मैग्नेट किया, जहां पे हमने इस तरह की फ्रीक्वेंसी डेवलप की अपनी लाइफ में, जहां पे हम जो पेमेंट रिसीव कर रहे हैं और जो पेमेंट दे रहे हैं उसके लिए हमने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया. और हमारा माइंडसेट ही चेंज हो गया, क्योंकि पैसे देना लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है. मतलब देते हैं लेकिन एक ग्रज आ जाती है, ओ गॉड इतना महंगा, ओ गॉड 25,000 इस बार का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इस तरह की फीलिंग्स आती हैं. तो पैसा देते वक्त देयर इज ऑलवेज दैट फीलिंग ऑफ टू मच मनी और नॉट गुड फीलिंग व्हाइल गिविंग मनी टू पीपल. स्पेशली आपके डोमेस्टिक हेल्पर्स ने अगर बहुत छुट्टी की हुई होती है तो आपको पैसा देने में एक हिच होती है. मतलब हिच नहीं होती, देयर इज समथिंग कि आई एम गिविंग, मैं उसके कार्ड भी नहीं रही हूँ और मैं पूरे पैसे मुझे देने पड़ रहे हैं वाइल इसने 7 छुट्टी करी इस महीने, है ना. इस तरह की बहुत नॉर्मल, इट्स अ वेरी नॉर्मल फीलिंग्स जो हमको रोजमर्रा में होती है. जैसे अगर माइंडसेट में आप कोई चीज होते हो कि ओके आई एम गोइंग टू बाय, सपोज यू आर गोइंग टू बाय योरसेल्फ एन आउटफिट और अ ड्रेस और समथिंग, और आपका ये था कि 1500 to 2000 में मैं ये खरीद लूंगी, और वहां जाके आपको पता लगता है कि वो 3599 की है. तो आपको मन में ये था, बिकॉज माइंडसेट ये था कि मुझे 2000 तक की खरीदनी है बट इतनी एक्सपेंसिव है, बट आपको बहुत अच्छी लग रही है, तो आप उसको देते वक्त अगेन मन में आता है कि अरे ये तो मतलब मुझे बहुत पैसे देने पड़ रहे हैं, तो मतलब वेस्ट हो गए. इस तरह की फीलिंग आती है. वो भी हमने चेंज कर दी थी कि जब आप पैसे दो, चाहे वो 5 रुपए हो चाहे 50,000 रुपए हो, उसमें ग्रैटिट्यूड स्टफ करके भेजना है, देना है ना, बहुत सारा. और जो चीज आपने उस पैसे की वजह से अवेल की है, जैसे अगर वो इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए खूब सारा थैंक यू बोलो, अपने आप उस पैसेज की जो देने वाली फ्रीक्वेंसी वो चेंज हो जाएगी. ये हमने सीखा था चैप्टर नंबर 9 में, है ना. तो हम ऑलरेडी 5 and 9 में पास्ट प्रेजेंट के लिए ग्रैटिट्यूड कर चुके हैं पैसे को लेके. उसके बाद मनी को लेके हमारी रिलेशनशिप में चेंज आया है ना, डेफिनेटली चेंज आया है. बिकॉज पहले जिस तरह से हम सोचते थे वैसे नहीं सोचते. अब जैसे कोई पैसा आता है तो आप सेलिब्रेट करते हो. आई सेलिब्रेट माई salary every month. I buy myself something really nice when I receive the money, and like बहुत खुशी से that thank you that I'm receiving so much abundance of money every month, and that too on 31st, right, of everyone. So इस तरह से you celebrate. So we started celebrating money now, started celebrating small little expenses that you make also. So obviously पैसे के साथ आपका रिश्ता, अगर आपने चैप्टर 5 और 9 diligently किया है तो ऑलरेडी वो चेंज हो चुका है. और अगर ये बुक आपने रिपीटेडली ओवर एंड ओवर अगेन की है तो पैसे के साथ हमारा रिश्ता बहुत डिफरेंट है. अब बहुत खुश और ब्लेसिंग्स के साथ खर्च करते हो, देते हो, और like that way. तो अब ब्लैंक चेक साइन करना विल बी फ्रॉम दैट फ्रीक्वेंसी. इट इज नॉट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लैक की फ्रीक्वेंसी हमने ऑलरेडी उसको डील कर लिया है इन द हेल्दीएस्ट पॉसिबल मैनर, है ना. सो अब आप ब्लैंक चेक साइन करोगे और उसमें ग्रैटिट्यूड डालोगे, बिकॉज हम जब ब्लैंक चेक साइन करते हैं तो दैट्स वेरी वेरी डिफरेंट. बिकॉज ये क्वेश्चन मुझे बहुत पूछते हैं कि डॉक्टर मर्फी ने तो स्ट्रिक्टली पैराग्राफ लिखा है कि डोंट साइन ब्लैंक चेक्स, वेयर एज वी हैव बीन डूइंग दैट प्रैक्टिस. इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स नॉट इवन कंपेरेबल. इनकी जो किताब है वो फर्स्ट टाइमर्स पढ़ रहे हैं और वो एक्सट्रीम लैक में है, ठीक है, उनके पास पैसे नहीं है. एंड दे आर, वन सेकेंड, आई जस्ट बी बैक.
I'm so sorry. So इसमें ये होता है that आप पैसे को लेके फ्रीक्वेंसी हाई है, और इसमें भी इफ यू रिमेम्बर जो हमारा चेक हम साइन करते हैं तो हम विजुअलाइजेशन में ग्रैटिट्यूड फील करते हैं कि वो पैसा हमारे पास आ गया है, और वो चीज रिसीव करके हम कितना सेलिब्रेट कर रहे हैं और कितने खुश हो रहे हैं, है ना। यही वाली प्रैक्टिस होती है हमारी मैजिक चेक प्रैक्टिस। मैजिक चेक एंड ब्लैंक चेक्स आर वेरी वेरी डिफरेंट. You cannot directly without doing all those practices come to this blank check, because फिर ये लैक की फीलिंग आएगी जो उन्होंने लिखा हुआ है, that blank check साइन करने का मतलब होता है there is a shortage, I will lose the house because of the mortgage, so इसलिए पहले से ही आप पैसे कर रहे हो, बिकॉज आपकी फ्रीक्वेंसी लैक की है, मतलब you're way below the line. ओके, सो हम कर रहे हैं हाईएस्ट फॉर्म ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी, विच इज सेकेंड हाईएस्ट इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमोशंस चार्ट. उसके ऊपर बस लव है, और हम लव को भी जनरेट करते हैं whenever we talk about receiving that particular thing जिसके लिए हमने मैजिक चेक किया है, और वो डायरेक्टेड होती है ऑफ द थिंग. इट इज नॉट अबाउट मनी, इट इज मीन्स टू एन एंड, राइट? So that is what he's written here. Don't sign blank check. So ऐसे नहीं, you have to scale, you have to bring yourself to a certain level of love and gratitude, and your being has to become gratitude. Only then the magic check works. Okay, so yeah, we go to the next point. Yeah. Your subconscious gives you Yeah. compound interest. Yeah. Okay, I'll read again. Your subconscious gives you compound interest. To him that had the feeling of wealth, more wealth shall be added. To him that had the feeling of lack, more lack shall be added. Your subconscious multiplies and magnifies whatever you deposit in it. Every morning as you awaken, deposit thoughts of prosperity, success, wealth, and peace. Dwell upon these concepts. Busy your mind with them as often as possible. These constructive thoughts will find their way as deposits in your subconscious mind and bring forth abundance and prosperity. तो ये दोनों बुक्स ने हमको कितना बिजी किया हुआ है. रोज इतने सारे असाइनमेंट्स मिलते हैं. कल हमको 5 बार वो भी करना था, हमको सुबह ये भी करना था, काउंट माय ब्लेसिंग्स, रात को हमको मैजिक ड्रॉ करना था, सोने के पहले हमें वेल्थ एंड सक्सेस भी बार बार बोलना था, सोचना था, दिन में हमको 3 से 4 बार वेल्थ सक्सेस करना था. अब से हमको ये पता लगा है that we have to keep thinking about these 4 powerful words which are prosperity, success, wealth, peace. Okay, so ये भी 4 हमारे पास ऐड हो गए. तो कितनी अच्छी बात है. कहते हैं ना, empty mind is a devil's workshop. एम्प्टी माइंड तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, इतनी सारी प्रैक्टिसेस है करने के लिए. इट इज सो ब्यूटिफुल दैट आवर लाइफ इज हुक्ड ऑन टू ऑल दीज थिंग्स नाउ. मतलब हमको हमारी प्रैक्टिसेस ही पूरी नहीं हो पाती हैं कभी कभी, इतना मतलब हमको टाइम चाहिए होता है. एंड सच कंस्ट्रक्टिव एनाबॉलिक प्रैक्टिसेस ऑफ आवर लाइव्स, इजंट इट? आई मीन सो ब्यूटिफुल. सो ऑल दैट मीन्स दैट बाय डिफॉल्ट अब हम इन वर्ड्स, ये वर्ड्स हमारा बीइंग बन जाएगा. हमारे subconscious mind is not a solid mass, as I mentioned, that it is there practically in every cell of our body. So subconscious mind or the supra consciousness, when I was reading Dr. Deepak Chopra's book, so in which he had mentioned that your subconscious is not like, you know, we call it sub का मतलब होता है थोड़ा नीचे ना. तो उन्होंने कहा था उसमें कि subconscious mind is actually the supra conscious mind, who knows much more than what we can ever think of, because human mind cannot go to that level where we start understanding the power and processes of the subconscious mind. It is way bigger than what a human mind is. मतलब हम एक नेचुरल दिमाग से सोच भी नहीं सकते कि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड है उसकी कितनी इन्फिनिटी के साथ उसमें जो इंटेलिजेंस, हीलिंग, खुशियां, मतलब जो भी हम बोले जो हमको चाहिए अपनी जिंदगी में, क्योंकि उसके पास इतनी पावर होती है. लेकिन उसके लिए टैप करने के लिए हमको अपनी फ्रीक्वेंसी वैसी रखनी पड़ती है. तो मैं यही बता रही हूँ कि बाय डिफॉल्ट हमारी जिंदगी ऐसी हो गई है, हमको इतने असाइनमेंट्स मिलते हैं जो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव, जिसमें हम अपने सुप्रा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की
इन्फिनिटी को लगातार टैप कर रहे होते हैं, या हमको ऐसे थॉट्स सबकॉन्शियस में डालने होते हैं दैट विल एलिवेट आवर लाइफ टू एन एक्सटेंट जो इन्फिनिटी तक चला जाए, इजंट इट? पूरे दिन ग्रैटिट्यूड, सुबह उठते ही हमको काउंट माय ब्लेसिंग्स, रात को सोने के पहले मैजिक रॉक, दिन भर में असाइनमेंट हमको मिलते हैं, आज हमको मैजिक वॉन्ड मिला हुआ है, कल हमको वेल्थ सक्सेस वो था जो हमको कॉन्स्टेंटली करना है, क्योंकि वो तो रोज ही करना पड़ेगा, तभी हमें ड्रास्टिक शिफ्ट नजर आएगा। इफ यू वांट रेडिकल चेंज देन यू हैव टू बी इन ग्रेटिट्यूड ऑल द टाइम, ठीक है? और आज हमको ये 4 पावरफुल वर्ड्स और मिल गए, विच इज प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, वेल्थ, पीस। इसमें से सक्सेस एंड वेल्थ तो हम कर ही रहे हैं, और उसमें प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि दिमाग भी ठीक होना बहुत जरूरी होता है। दिमाग पीसफुल होगा, अपने आप फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में एलिवेट हो जाएगी। दिमाग में बहुत नॉइस चल रही होती है, क्लटर्ड माइंड होता है, या डिप्रेसिव से लो फीलिंग थॉट्स आते हैं, तो वो पीसफुल, अगर पीस हमारा कीवर्ड हो जाएगा लाइफ का, तो हमको वैसे वाले नेगेटिव जोन वाले फीलिंग्स नहीं आएंगे। So this is how it works. So prosperity, success, wealth, and peace. Dwell upon these concepts, है ना? Busy the mind with them as often as possible. So the moment something ulta pulta happening in our life, immediately come back to prosperity, success, wealth, and peace. Right? So this is what, busy your mind with them as often as possible. These constructive thoughts will find their way as deposit in the subconscious mind. और कल हमने पढ़ा था, your subconscious mind is a universal bank. Whatever you deposit multiplies several times and comes back into your life as your actual reality. है ना? वो हकीकत बनके हमारी जिंदगी में हमारे सामने आएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक यूनिवर्सल बैंक की तरह है। जितना आप डालोगे वो सेवरल टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है उसमें, और रात भर में हमारा दिमाग में एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस होता है। एम्प्लीफाई मतलब जैसे लाउड स्पीकर होता है ना, वो एक छोटी सी आवाज है जो अभी मैं इस कमरे में बोल रही हूँ, अगर छत पे कोई लाउड स्पीकर लगा दे तो वो बहुत सारे घरों में जाएगी, उसको एम्पलीफाई करना होता है। एम्पलीफायर्स होते हैं जो छोटी आवाज को बहुत बुलंद आवाज के रूप में बहुत लोगों को सुना देते हैं, जो पूरी कॉलोनी वाले आवाज सुनेंगे, है ना, उसको एम्पलीफिकेशन बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो थॉट्स हम डिपॉजिट कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में of these words, okay, they are not even sentences, they are just the words, they are just prosperity, success, wealth, peace. You're depositing them and they are getting amplified bigger and bigger. और हमारी जो एक्चुअल रियलिटी होती है वो एक्चुअली हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही होती है। सबकॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, डोमिनेंट थॉट्स वो होते हैं, वही हम हकीकत में देखते हैं अपने आउटवर्ड लाइफ में, है ना? तो ये इन वर्ड्स को हमको वी हैव टू, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, दैट हुक योरसेल्फ टू दीज वर्ड्स एंड दे शुड बिकम द पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, एंड ऑल द टाइम वी थिंकिंग अबाउट दीज इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट लैक. So this book is about, transformation of the subconscious mind. We are, and naturally when we start to ingrain these powerful words in our subconscious, so वैसे भी जो lack, limitation, unworthiness, या जो भी पिछले हमारे पता नहीं पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में बचपन से जो अभी तक जो हमारे डोमिनेंट थॉट्स अभी तक रहे हैं, वो अपने आप चले जाते हैं। मतलब साइंस सबकॉन्शियस माइंड में इसी तरह काम करती है कि जैसे आपने पीस बोला, डिप्रेशन वाली चीजें आपकी जिंदगी से चली जाएंगी। जैसे आपने वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी बोला, तो आपका लैक एंड लिमिटेशन और वो जो मेंटल ब्लॉकेजेस थे वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। लेकिन फिर लगातार करना पड़ता है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू एनी सक्सेस. सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो वी हैव टू रिमेंबर दीज. सो या Why nothing happened? I can hear you saying, "Oh, I did that and nothing happened." You did not get results because you indulged in fear thoughts, perhaps 10 minutes later, and neutralized the good you had affirmed. When you place a seed in the ground, you do not dig it up. You let it take root and grow. Suppose, for example, you are going to say, "I shall not be able to make that payment." Before you get further than "I shall," stop the sentence and dwell on a constructive statement such as,
By day and by night, I am prospered in all my ways. Yeah, so thank you so much, Niti, for reading. Thank you. So, why nothing happened is, इसमें बहुत clearly है कि suppose अगर आप बार बार बोलते हो कि कुछ हो ही नहीं रहा मेरी life में, so then so many people who talk to me who say that it's not moving, that thing is not moving. So this is the dominant thought that things are not changing. बिकॉज होता क्या है कि एक अच्छी चीज, आप सपोज आपने ये बोला वेल्थ इन सक्सेस, वेल्थ इन सक्सेस, उसके बाद एक बिल आ गया तो क्या मैं क्यों पेमेंट कर रहा हूँ इसकी बिना बात के, ऐसा है, ये है, वो है। अब नहीं भी करना है तो उसको बोलने की कोई जरूरत नहीं, और इस तरह से लैक एंड लिमिटेशन के साथ नहीं बोलना है, तो हम लोग कंप्लेन करके वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। जो आपने 4 दिन एफर्मेशन किया, ठीक है, बार बार आपने अपने अंदर ये डिपॉजिट करने की कोशिश की that I'm prospering day by day, my income is constantly increasing, by day and night I'm receiving money and my income is growing more and more. So ये बोला, उसके बाद 2-3 बार में ऐसे कंप्लेन कर करके धोबी को पैसे दिए, या मतलब जो भी प्रेस वाले आए और उसमें यू आर आर्ग्यूइंग अननेसेसरली बिकॉज ऑफ 2 रुपीज, ठीक है, और बहुत आर्ग्यूमेंट वो बढ़ रही है, तो उसमें इमोशंस भी जा रहे हैं, इमोशंस अगर गए तो वो लैक एंड लिमिटेशन का आ गया, ठीक है। तो खुशी से भी रिजॉल्व कर सकते हैं इश्यूज। ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज से दैट पहले के 10 रुपीज ड्यू थे तो वो 10 रुपीज काट के मैं आपको ये दे रही हूँ, इस तरह भी कर सकते हैं, है ना। मतलब बिल्कुल अच्छे से बात करके, बिना डिपिंग बिलो द लाइन, वरी, एंगर, इन सब में अगर डिप करेंगे तो पैसे जाते जाएंगे। देखो दैट्स वेरी वेरी क्लियर। पैसे सिर्फ खुशी की फ्रीक्वेंसी में अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। पैसे कभी भी, एंगर आपने किसी और चीज से किया, ठीक है, मे बी किसी ने आपकी गाड़ी को टच कर दिया, एंगर आपने उसकी वजह से किया, उससे भी पैसे चले जाते हैं। ये चीज हमने पावर बुक में पढ़ा था, ठीक है। सो यू डोंट नो, सो इसीलिए इसमें क्लियरली लिखा हुआ है दैट डोंट न्यूट्रलाइज ऑल योर हार्ड वर्क एंड ग्रैटिट्यूड दैट यू हैव डन. You don't have to neutralize all of that by complaining or by indulging in very worrisome situations. जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जैसे ही थॉट, अब ठीक है, करंट रियलिटी यही है, आई शैल नॉट बी एबल टू मेक द पेमेंट, राइट, ये करंट रियलिटी हो सकता है जेन्युइनली होगी ना उस पर्सन की, कि ठीक है आई एम नॉट एबल टू मेक द पेमेंट बिकॉज हो सकता है बहुत इन्फ्लेटेड सा कोई बिल आया और उस हिसाब से उस पर्सन के पास पैसा नहीं है, विच इज ओके, ठीक है। तो उसको इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप शुरू करो दैट आई शैल मेक दिस पेमेंट राइट नाउ, आई डोंट हैव द मनी, और आप किसी को बोल रहे हो आई शैल मेक दिस पेमेंट आफ्टर 2 months और समथिंग, इट इज, डॉक्टर मर्फी कह रहे हैं, स्टॉप देयर ओनली। द मोमेंट यू आर इलेबोरेटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि मैं इस चीज के पैसे नहीं दे सकती, स्टॉप दैट वेरी मोमेंट and go back to the constructive statement like by day and night I am prospered in all my ways. Okay, like हम क्या बोलते हैं, thank you for the money. The moment something is going wrong in health, thank you for my perfect health. ठीक है, वो constructive है, ठीक है। So it might be that it is not like that right now, but वो वाली जो उसमें इमोशन बहुत होते हैं नेगेटिव चीजों में, तो वो आपकी बाकी की चीजें भी रॉब कर लेगा, हेल्थ एंड मनी एंड सक्सेस और वो सारी चीजें। सो इमीडिएटली चेंज इट। इसको मैजिक बुक में हमने पढ़ा है, बीइंग कॉल्ड एज अ लाइफ लाइन, वी कॉल इट अ लाइफ लाइन, है ना। इमीडिएटली यूज अ लाइफ लाइन द मोमेंट यू हैड अ स्पैट विद समवन, कुछ आपकी आर्ग्यूमेंट हुई या कुछ ऐसे हुआ एंड यू डिड नॉट लाइक इट, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट रिलेशनशिप, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट रिलेशनशिप। सो वो परफेक्ट रिलेशनशिप है और थैंक यू है, उन दोनों की एनर्जी जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी को बिलो द लाइन नहीं जाने देगी। और आपको ये तब तक बोलना है जब तक आप 0 पे नहीं आ जाओ, कम से कम। ऑफ कोर्स प्लस में तो एकदम से जब बहुत लो होते हैं तो प्लस में जाना बहुत मुश्किल होता है, मतलब दुखी से एकदम खुशी तो बहुत मुश्किल से नहीं हो पाती है इंस्टेंटली, बट एटलीस्ट यू कैन कम टू द पॉइंट ऑफ 0, from there you can start adding more and more, ठीक है। come to the point of 0, you have to keep telling yourself thank you for my perfect relationship, thank you for my perfect relationship। for बोलने की भी जरूरत नहीं है, तो सिर्फ थैंक यू बोल दो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके। यू फेक इट, इट्स ओके, बट अपने आप पे वर्क करना हमको बहुत जरूरी होता है, ठीक है, बिकॉज यू आर दैट वन बीइंग हु इज द सेंटर ऑफ योर यूनिवर्स एंड यू मेक वन यूनिवर्स योरसेल्फ बिकॉज यू आर द माइक्रोकॉस्म ऑफ द मैक्रोकॉस्म ऑफ यूनिवर्स। अपने आप पे वर्क करो,
ठीक है। सो ये चीज ये इन्होंने बताया है, वही जो लाइफलाइन हमने वर्ड यूज किया, उन्होंने बोला है कि जैसे ही गड़बड़ हो रही है, आपको लग रहा है कि आपके पास किसी चीज को देने के पैसे नहीं है, वैसे ही बोलो बाय डे एंड नाइट आई एम प्रॉस्पर्ड इन ऑल, मेरी इनकम बढ़ती जा रही है, मेरे पास पैसा आता जा रहा है, दिन रात मेरी इनकम बढ़ रही है। तो जैसे ही आप ऐसी चीजें सोचोगे, और इसमें थैंक यू ऐड कर दो, ये हमने सीखा है क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड वर्ल्ड से हैं ऑलरेडी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक में ग्रेटिट्यूड थोड़ा बाद में आता है चैप्टर, है ना, क्योंकि उन्होंने उस इंटेंशन के साथ तो नहीं लिखी है ना, बिकॉज ये बुक 70s में लिखी हुई थी। तो ऑब्वियसली रॉडा बर्न की बुक तो बहुत बाद में आई है, लाइक 2011 में मैजिक आई थी, 2007 या 8 में आई है शायद, तो तब आई थी, तो बहुत सालों के बाद, मतलब तो अभी तक तो इसमें इन्होंने ग्रेटिट्यूड का भी ये बताएंगे आगे जाके, ठीक है। सो हमको, since we already know gratitude, so thank you that my income is increasing by day and night and I'm prospering in all my ways. So attach your thank yous and attach something more constructive as a lifeline, जैसे नेगेटिव थॉट्स आए, ठीक है। और वो जो 4 वर्ड्स हमको मिले हैं, पीस, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, उनको आप ग्लू कर लो, ऐसे ही थॉट सोचो, ठीक है। सो वेल्थ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी एंड पीस। सो इट्स वेल्थ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, पीस, किसी भी ऑर्डर में बोलो, उनको डिपॉजिट करो अपने लाइफ में, अपने आप आपको जो आउटवर्ड रियलिटी है उसमें आपको डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, बहुत जल्दी आएगा। और ड्रास्टिक रेडिकल शिफ्ट आने में मिनिमम, डॉक्टर मर्फी ने पहले भी बोला था 21 days, 2 + 1 is 3, so 3 is a number of creation. So वो सारी बुक्स में यही लिखा हुआ है, like not just him, even बॉब प्रॉक्टर की बुक्स में 21 days, दीपक चोपड़ा ने 21 days लिखे, 21 days तो करना ही पड़ेगा ना मिनिमम, लाइफ लॉन्ग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर 21 days तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो इन वर्ड्स पे हम हुक्ड रहेंगे। आप अपने शब्दों की जो वोकैब है, हमारी जो वोकैबुलरी की जो हमारी डिक्शनरी है दिमाग की, वो अपनी डिक्शनरी बनाओ कि किन वर्ड्स में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना है, कौन से वर्ड्स आपको ओवर यूज करने हैं, कौन से वर्ड्स आप चाहते हो अपनी जिंदगी में देखना, सो वो उन वर्ड्स में ड्वेल करो, बिकॉज शब्दों की जो पावर होती है, इसके बारे में बहुत किताबें लिखी गई हैं, ठीक है। सो अब इतने छोटे समय में इतना ज्यादा समझाया नहीं जा सकता है, बट दैट इज व्हाट वी नीड टू काइंड ऑफ रियलाइज। इफ द मेंटर्स आर सेइंग समथिंग, दे आर सेइंग समथिंग विद अ वेरी डीप मीनिंग, राइट। सो हम शब्दों पे बहुत फोकस करेंगे, एंड दिस इज व्हाट वी हैव लर्न्ड फ्रॉम द नंबर 2 बुक हियर, that words, wealth, success, prosperity, abundance, peace, health, all these things, brilliant, amazing, awesome, phenomenal, majestic, magnificent. So all these are our words. They are going to determine our life. Okay, so that's it for today. Thank you so much. Anyone wants to add or share anything? Thank you, ma'am. It was amazing as usual. Thank you so much. कुछ रहता ही नहीं है. You touch everything.